शुरू करें? The party expresses its deep admiration for the Prime Minister, for his courage, vision, imagination, and skill in creating a transformative movement on the subcontinent. This has been what can be called an effective example of climate change, except of course that we want subcontinental warming instead of a cold. In my view, even the personal equation between the two prime ministers is symptomatic of the diplomatic thaw that has taken place. We also extend our congratulations to Pakistan's Prime Minister for his vision, for his leadership in this pursuit of peace. We all know that the search for peace does not mean that we have already found it. But the process, particularly in a region with as many complex issues and complex problems such as ours, with a history such as ours, the pursuit of peace, always a fragile commodity, requires the kind of courage shown at Lahore. Prime Minister Modi is in fact a master of the transformative movement. We have seen this, the manner in which his invitation in 2014 to SAARC leaders was one such movement. The subsequent events, in fact, indicated the difficulties involved in the process. But it is a remarkable fact, and perhaps unprecedented, that this peace process has been revived, and the manner in which the Prime Minister has revived it is quite extraordinary. This gives us all hope that there will be one happy consequence, and that if all goes well, the Prime Minister will undertake the visit to SAARC next year. The extraordinary public response, the positive public response to these developments and to the Lahore visit tells its own story. Democratic leaders always understand the heartbeat of public opinion. So I'm sure they were confident that they would get this response. But even then, the depth and extent of the positivity after this event is extremely reassuring, and in both nations. And I would say not just in both nations, but in South Asia and across the world. The world has welcomed this development, the United States, the United Nations. India has always sought to resolve its disputes with all its neighbors
through a peaceful dialogue. This vindicates our desire for peace. And this also provides yet another opportunity to write a new chapter in a difficult history. But yes, a new chapter in Indo-Pak relations cannot be written by a single author. It requires two authors. And it requires two authors who read from the same page. So once again, we extend our warmest appreciation and applause for Prime Minister Narendra Modi's extraordinary initiative, for his great vision, not only for Indo-Pak relations, but for the whole SAARC region, for his desire to see a comity of nations within the SAARC umbrella, where leaders can call upon each other without abandoning formality, but with a degree also of unprecedented informality. After all, 70 years ago, Europe was a frozen war zone. Today, a European leader can call upon another leader at very short notice. This is a kind of friendship and kinship in the politics of South Asia that is part of his vision. As he has said so often before, together we can fight the challenge, the curse of poverty much better than we can find it singly. The potential of economic growth being achieved in quantum leaps is so much better through SAARC cooperation. Pakistan's political parties, mainstream parties of Pakistan, we are happy to note, have also welcomed this. We also welcome the fact that in our own country, parties like CPI and CPM have welcomed this initiative. Unfortunately, there are one or two parties which, regrettably, I'd say this with some sadness, seem to prefer partisan politics to the national interest. We hope that they will also understand that the Prime Minister's vision is for the common good. It's for everyone in the region, in the country. And this is hopefully yet another substantive beginning towards a new future. If any of you have any questions, I'll be happy to take them. बचपना का क्या जवाब दिया जा सकता है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं, ये एक सीरियस मामला है. All seeds of this relationship are laid in silence. और ये जो एक प्रोसेस हुआ था, हाँ, ये बात ज़रूरी है कि ये मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट, ये मूवमेंट तो अचानक नहीं आता है.
वातावरण बनता है तभी आता है। और इसका वातावरण जो है, फिर से इसकी एक इतिहास है। ये वातावरण बना है ऊफा के बाद। ऊफा जुलाई 2015, हमारा इस साल जुलाई में। उसके बाद पेरिस में बना है। उसके बाद बैंकॉक में दिसंबर में जब 2 NSAs मिले हैं तब बना है। उसके बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी जब हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में जो अफगानिस्तान पे हुआ इस्लामाबाद में, जब वो गई तब और भी बना। हमारे सामने सामने एक बीज जो था, एक कम से कम सैपलिंग तो बन गया। तो ये कहना कि किसी एक व्यक्ति और एक इंडस्ट्रियलिस्ट, ये ना सिर्फ गलत है बल्कि इस सवाल जो उठाने वालों की जरा सा अकल पे शुबह करनी चाहिए। हमारा जो पोजीशन है कश्मीर के ऊपर, वो जो है वो रहेगा, वो है कि जो भी मसले हैं वो बातचीत से हल कीजिए। तो वो बातचीत करने को हम टेरर पे बात करेंगे, इसने प्रधानमंत्री में इसमें ना कोई दो राय नहीं है। दोनों प्रधानमंत्रियों में ये बातचीत हो चुकी है, टेरर पे बात हो चुकी है। और अगर कश्मीर पे बात करनी है तो हमने तो शुरू से कहा है, बात करने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन और कोई रास्ता जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, कल की जो है वो स्ट्रक्चर टॉक्स नहीं थे। तो हाँ, तो स्ट्रक्चर टॉक्स नहीं थे, वो एक माहौल था। मैंने जैसे कहा, एक माहौल बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी और कोशिश कामयाब हुई। आप अगर देखेंगे तो बहुत बार इंडो पाकिस्तान रिलेशंस में माहौल का असर बहुत पड़ता है, बहुत पड़ता है। तो इसलिए जब जैसे मैंने कहा, अगर क्लाइमेट चेंज हुआ तो फिर इसका असर बड़ा पॉजिटिव ही पड़ेगा। नहीं, उनके जाने से भी एक नया वातावरण बना है ना। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो बातचीत का प्रोसेस है, आपने देख ही लिया है कि फॉरेन सेक्रेटरीज की बातचीत होगी, जैसे एक प्रोसेस होता है। जी, सॉरी, किस किस किसकी? अरे, मैं टेररिस्ट के बर्थडे का ना ध्यान देता हूँ, या ख्याल रखने की कोई इच्छा है। और इन सब लोगों के बारे में, ये तो क्रिमिनल है, इनके बारे में क्या बात करें। हाँ, सिर्फ है इन क्रिमिनल्स को कानून के सामने लाना चाहिए। नहीं, टेरर नहीं, देखिए जिस लेवल पे पीएमएस में जरूर आप जैसे समझते हैं एनएसएस के बीच में इन सब बातें हुई हैं ना दिसंबर में। कंसिस्टेंसी, खैर वो मैं समझता हूँ कुछ पार्टी के प्रेशर के वजह से वो उनको कुछ कहना पड़े। खैर छोड़िए बातों को। देखिए, जहाँ तक ये सब ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज हैं,
सुषमा जी ने बहुत बार कहा है, और जितना सुषमा जी ने हमारे फॉरेन मिनिस्टर रह के और मोदी जी के नेतृत्व में जितने ह्यूमैनिटेरियन काम ये 1.5 साल में इस सरकार ने किया है, शायद ही कोई पहले इतना किया होगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज उसी तेज़ी से और उसी सिंसेरिटी से ये भी सोल्यूशन आ जाएगा। नहीं, अपनी पार्टी में अगर सलाह देते हैं तो वही, वी डोंट इंटरफियर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अनदर पार्टी। मैं जैसे कहा अपने बयान में, हमारी आशा है कि एक इससे अगर वातावरण बन जाता है कि सार्क का समिट सक्सेसफुल हो, तो ये भी बहुत साउथ एशिया के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। और कोई सवाल है जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं? जी, जरूर बोलेंगे, हमें बोलने में क्या, हम रोज बोलते हैं और बोलने में ना कोई झिझक नहीं है, बिल्कुल झिझक नहीं है। अरुण जेटली जी, इस मामले में हमें ना कोई किसी किस्म कि उन पे अगर आप उंगली उठाएंगे तो इतनी बड़ी गलती होगी आपकी कि आप खुद समझ जाएंगे। सच्चाई जो है अरुण जेटली जी के साथ है, इंसाफ जो है अरुण जेटली जी के साथ है, और जो लोग उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं वो, मैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि वो या तो गुमराह है या झूठ बोलते हैं। धन्यवाद।